और वहाँ हम इस सैटेलाइट को रखना चाहते हैं। और ये जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा, और लेकिन हर समय ये सूर्य को देखता रहेगा। एक किस्म से आप इसे कहिए, ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है, और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है, जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं और केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हम देखा करते थे। इसमें जो सोलर कोरोना ग्राफ लगा है वो सूर्य की जो बिंब है उस चमकती डिस्क को एकदम ढक लेगा, ताकि हम जैसे ही इंटेंसिटी ड्रॉप होगा तो हम सूर्य का बाहरी वातावरण जो है कोरोना, उसका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ये अत्याधुनिक उपकरण इसमें हैं, यानी कि पहले और इतनी अप टू डेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जाहिर है कि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन डेटा सेट मिलने जा रहा है। इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करने के लिहाज से हैं। सर, इसका लाइफ टाइम क्या होगा और इससे क्या क्या प्रॉफिट होगा? साथ में साथ कोई ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन है सर आज हमको? देखिए, एक तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जहाँ तक चैलेंज की बात है तो जब L1 पॉइंट पर जाना है तो वो अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि इतनी दूर है, ये लगभग 4 गुना है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से। दूसरी बात यह है कि सब इंस्ट्रूमेंट्स को फंक्शन करना है, और अगर बेनिफिट का लिहाज देखें तो एक तो साइंटिफिक बेनिफिट है, और उसको हम पैसों में नहीं आंक सकते हैं, लेकिन ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं इनके प्रति जनता की रुचि बढ़ती है, और जनता समझती है कि हाँ, हमारे भारतीय वैज्ञानिक कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा एक यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो उसके तो मूल्य को हम नहीं आंक सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है जब भी कोई ऐसी लॉन्च होती है या ऐसा कोई प्रोग्राम इसरो की तरफ से या भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से ये सामने आता है। என்ன தாத்திட்டு இருக்கிறாரு அவரு? நேற்று வந்தீங்க? நேற்று லைவ் அவன் என்னன்னு கேளு. கூப்பிட்டான். வண்டி வருது, 7 வருஷத்துக்கு
उसका टेम्परेचर का एक शॉट जरूर लेना है, वो ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर दिखा रहा है ना, वो उससे पता चला विंड स्पीड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्च के लिए। बाद में ले लेना दैट इज व्हाट यू नो, इट इज डिटरमाइन दैट यू आर रेडी फॉर द लॉन्च। ऑल एवरी स्काई इज सुपर कूल, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। See, for PSLV, for ISRO, it's child's play. No, they'll be coming. The gallery, I think 25,000 capacity is there. I was told by one scientist that it was the entire gallery was filled when they opened it online in finals. I am staying in that Tada, one hotel is there. Because here you don't find any good hotels. There also, a lot of guests. I was meeting them yesterday evening, so they said, no, we have come to see the launch. You stayed here? No, Very nice. yeah. It's a good hotel. Last time I stayed here only in that Lakshmi Palace when I came for the Chandrayaan thing, but it was not that good. So someone suggested me that that Sri City. But what to do? I want morning I need to stay. Very true. How long you are? So 1 year. 1 year. I was in that. I wanted to stay. Siena is good. You have good blood pressure is there, but still Oil pressure is too. agency always. Past 2 to 3 months, there are a lot of issues with that. Yeah, like that. Our legs are running. That is fine. Can I have your number, sir? 9808 6391. I will save. I will not. There is no need to save your name. It will be there. Very unique. Yes. Yeah. ஃபோன் பண்ணிக்கல அவங்க பேர் கொடுத்துருவோமா? சார் நிற்க வச்சுரு, அப்படியே நிற்க வச்சு, இங்கே வந்து நிற்க வச்சு, அங்கே வந்து ஆடியோ செக் பண்ணாத, சேர்ந்து இப்படியே ஆன் பண்ணி வச்சு இருக்கிற இது சாதா சதீஷ் ஆனர்ல இருந்து சார் திட்டுவானுங்க. அவனுக்கு வந்து பேக் ஆகிடும், அப்படியே அப்படியே போனை போட்டு சொல்லிடுவானுங்க. என்ன பேசிட்டு நீ போவாத, போவே போவாது.
அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரெடி ப்ரோ, கிட்ட போயிடுவா. நீங்கள் பேசிட்டு யாரும் இன்னொருத்தவங்க நீங்கள் எனக்கு இங்கே தெரியல. ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆகல. ஃபோன் பண்ணுங்க. அப்பா எல்லாத்தையும் போட்டு வருமா? இது இந்த இது அனுப்பிச்சுட்டீங்களா? அது இனிமேல் தான் நடக்கும். அனுப்பிச்சுண்ணா இல்லை ஸ்பீடு, அதாவது அந்த ஸ்பீடு இது ஓவர். श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो आज एक और देखिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर यहाँ पर आज एक तो हम सन को स्टडी करने जा रहे हैं। लॉन्च की तैयारी है। आदित्य L1 जो स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि दिस इज अवर फर्स्ट मिशन विच वी आर सेंडिंग नियर द सन. सो जब आप बोलते हैं आदित्य L1, आदित्य का मीनिंग मालूम है, दैट सन, सूर्य को आदित्य बोलते हैं. L1 क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. L1 को बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट. वैसे तो 4-5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 हैं, बट L1 पॉइंट जो है इट इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ. और इस पॉइंट में क्या होता है कि जो भी स्पेस क्राफ्ट को हम लॉन्च करते हैं, इट विल बी ऑलवेज सीइंग द सन. उसका सन का व्यू कभी कटेगा नहीं. देयर विल बी नो एक्लिप्सिंग, देयर विल बी नो अकल्टेशन. सो यू विल बी ऑलवेज सीइंग द सन. और जब भी व्हेन वी स्टडी द सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव अ कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द सन. अदरवाइज हमारा डेटा जो है बिखरा हुआ रहेगा. सो दिस पर्टिकुलर मिशन, देयर विल बी सेवरल पेलोड्स विच इज गोइंग, अबाउट 7 पेलोड्स आर गोइंग, जिसमें से 4 जो है, 4 पेलोड्स विल बी डायरेक्टली व्यूइंग द सन फ्रॉम द पॉइंट, एंड द अदर 3 पेलोड्स आर गोइंग टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द पॉइंट. L1 पॉइंट में रह करके वो डेटा कलेक्ट करने वाले हैं. और कहां कहां पर देखने वाले हैं, उन लोग जो है फोटोस्फीयर को देखेंगे, क्रोमोस्फीयर को देखेंगे, कोरोना को स्टडी करेंगे. कोरोना जो है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, जहां से आपको फ्लेयर्स दिखाई देते हैं. और क्या स्टडी किया जाएगा, द स्टडी विल बी बेस्ड ऑन टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द एक्टिविटीज विच आर, उसको बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ द सन. व्हाट आर द रीजन जो डायनामिक्स है, एंड देन व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सोलर विंड, व्हाट इज द स्पेस वेदर, because sun is a star where things are continuously changing, which we can observe from the earth also. हम लोग को उसमें सन स्पॉट्स दिखता है. सन स्पॉट एक्टिविटी इटसेल्फ ही क्यों होता है, that also has to be studied, because that sun spot is one thing which can and it does disturb the communication network. So sometimes you will find that हम लोग को signals नहीं आते हैं. That could be because of the fierce activity of sunspots on the sun. और कल किस व्हीकल में जाने वाला है? इसके दिस इज गोइंग टू बी सेंड थ्रू PSLV. तो PSLV में लॉन्च कर रहे हैं श्रीहरिकोटा से. टुमारो 11:50 इज द शेड्यूल्ड लॉन्च टाइम. एंड इसरो के तो लाइव यूट्यूब चैनल है, पीपल कैन वॉच. वी हैव ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड हियर, यहाँ पर 10:30 बजे कल देयर विल बी अ टॉक बाय वन ऑफ द एक्सपर्ट्स. वो बात करेंगे हमसे अबाउट आवर सन फर्स्ट एंड अबाउट द आदित्य L1 मिशन. उसके बाद में वी आर गोइंग टू लाइव स्ट्रीम करेंगे जो प्रोजेक्शन जो लॉन्च होने वाला है. 12 बजे से वी आर गोइंग टू हैव अ ओपन हाउस क्विज ऑन द टॉपिक आवर सन. सो दिस इज ओपन फॉर ऑल. आई मीन कोई भी आ सकता है, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट टू आंसर क्वेश्चन. इफ यू आंसर यू गेट अ गिफ्ट.
राइट सो एनी स्कूल चिल्ड्रन किसी को बुलाया जा रहा है सर इसके लिए Tomorrow, yes, we have invited some college and school students, but then it is an open thing. They can walk in and join us tomorrow. சரி கிளம்புறோம் ம் பாய் விஷயம் எப்படி கொடுக்கணும்னு யோசிக்கிறேன். இந்த விஷயம் எப்படி கொடுக்கணும்னு யோசிக்கிறேன். லைவ் பஞ்ச் பண்ண கொடுக்க முடியாது அந்த விஷயம். பா அந்த இதே வந்து அப்படி ரவுண்டா கீழே ரிஃப்ளெக்ஷனோட பாருங்க. Yeah, this after the Chandrayaan on itself, this mission we thought of reconfiguring. Originally, when we talk about as a follow-on to AstroSat mission, which is basically for astronomical multi-wavelength satellite, there's a follow-on to that to study basically for the sun and some of the unanswered questions point of view. Originally was planned a low Earth mission. After the success of Chandrayaan, I think it has been reconfigured as an Aditya L1. That means original objective remains same. An added objective of looking at the space weather and trying to forward our operational satellites point of view. I think this mission was repositioned to the L1. And it's really technically, it's a very, very challenging to acquire the L1 point and have an orbit around that. And over and above that, able to survive for the 5 years with a very, very accurate pointing requirements this mission is concerned. And that way, I think today we have nearly 7 science instruments. With that, these will having one is technically very, very challenging to acquire the orbit, and scientifically going to be rewarding because 7 instruments will try to understand, give more data to understand more about the dynamics and phenomena what's happening in the moon. And again, operationally, it will be very purposeful because, for example, India itself is having more than 55 satellites worth more than 60,000 crores of worth. So their operationals are not uninterrupted. I think this message, whatever coming from the solar activities, will help to keep the satellites a very safe and secure point of view. So that way, I think it is a multi-purpose, a challenging, and yes, I think it's beyond Chandrayaan and Mangalyaan. This also has its own purpose to science as well as for the operational missions point of view. So there is a little bit confusion. People are thinking that this Aditya L1 is going to place on the sun like moon. So can you elaborate how different is this from Chandrayaan 3? Because it's going to be placed on Lagrangian L1 point. So like orbit near to sun. Right? Correct. Yeah, this is unlike other satellites which basically it goes around the mother planet, be it Earth, be it the moon, or be it a Mars like that. But this mission is not exactly like that. But this is the mission wherein the gravity of the both sun and Earth being coming very close, balanced. Around that point, something called the yellow Lagrangian point. There are 5 such points, but this particular point, which is nearly 15 million 1.5 million kilometers away from the Earth, 50 lakhs kilometers away from Earth, and look at the Earth always. One side of the satellite will look at always sun. So that gives an uninterrupted observation of the opportunity, not even really going towards, not very near to the sun, but it's good enough to have at least a warning of nearly 3 to 4 days in advance what's coming towards the system is concerned. One final question. What's your message to the ISRO? Yeah, the message is basically, I think ISRO is now it's coming with the bang.
after the COVID. It was coming up very nicely, but just COVID has made us some small setback, and Chandrayaan 2 also got a setback. But now I think it's coming as a bang with Chandrayaan 3 already in a place and doing well. Now Aditya is coming, and I think I'm expecting another satellite, very, very ambitious satellite called NASA ISRO Synthetic Aperture Radar NISAR. That is basically to look at the global warming, other things, are very, very minute details that will provide enough data. And beyond that, in any operational missions for communication, navigation, satellite going on, commercially also, I think it's venturing there. That way, I think it's an all-round effort. It enthusiasts the people to come in a big way. So that way, I think ISRO is now is coming with a big bang. Well, that day has arrived when ISRO is going to launch India's very ambitious project, Aditya L1. And this is a space-based solar observatory, and Indian astronomers have worked quite a lot for several years, more than a decade, to achieve this goal. And that day is today, when this satellite will be launched into space, and it's eventually going to be placed at a point called Lagrange 1, that is L1. And this is a point which is about 1.5 million kilometers from this Earth's center in the direction of the Sun, on the Sun-Earth axis. This point is where the gravitational field of the Earth and the Sun are equalizing, in a sense that there's no force felt, and it's just equalized force. So let's hope in the next 4 months, when at the L1, as the satellite is placed, it's going to face the Sun all the time, 24/7, and all through the year. So Indian astronomers are going to benefit from it, because it's a high technology instrumentation that has gone in, and it's very up-to-date electronics. So we are also aiming at regions to observe from this point, regions very close to the Sun's surface, and the solar corona is the main sort of object of our interest. Sir, is there any challenges for? Sir, is there any difficulty or challenging situation, sir, today? I don't see at the moment, because PSLV rocket is a trusted workhorse of ISRO, and it's going to be first placed in the Earth-bound orbit. Then there will be several Earth orbit raisings, after which it will be placed in a cruise orbit, and then eventually it has to land at L1, where ISRO is going to do quite a lot of maneuver in such a way that it follows, it enters that point and adopts a halo orbit and around that point. And it is going to face all the time. The solar panels are going to face the Sun all the time, so that energy is available and instruments can work. So I want to ask one more time. So why L1? Why particular L1 point? One thing is that near the Earth we have many more difficulties, and continuous monitoring of the Sun is very essential, because L1 moves around the Sun as the Earth moves around the Sun. It's the same angular velocity, and therefore all the time the Sun is available, and there are no eclipses caused by the Moon. And obviously that point also is of interest, because we are virtually outside the magnetosphere of the Earth, so we can understand the intricacies of interplanetary medium. Thank you, sir. भारत इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्या बोलते हैं सर इसके बारे में? एकदम सही बात है, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो PSLV रॉकेट पर एक विशेष सैटेलाइट लगाया गया है, जिसको कि इस पर लॉन्च किया जाना है. इसका नाम है आदित्य L1. आदित्य यानी कि सूर्य का अध्ययन है. L1 अर्थात एक ऐसा बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, और वहां हम इस सैटेलाइट को रखना चाहते हैं. और ये जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा, और लेकिन हर समय ये सूर्य को देखता रहेगा. एक किस्म से आप इसे कहिए, ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है, और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं. उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है, जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं, और केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हम देखा करते थे. इसमें जो सोलर कोरोना ग्राफ लगा है, वो सूर्य की जो बिंब है
उस चमकती डिस्क को एकदम ढक लेगा, ताकि हम जैसे ही इंटेंसिटी ड्रॉप होगा तो हम सूर्य का बाहरी वातावरण जो है कोरोना, उसका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ये अत्याधुनिक उपकरण इसमें हैं, यानी कि पहले और इतनी अप टू डेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जाहिर है कि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन डेटा सेट मिलने जा रहा है। इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करने के लिहाज से हैं। सर, इसका लाइफ टाइम क्या होगा और इससे क्या क्या प्रॉफिट होगा? साथ में साथ कोई ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन है सर आज हमको? देखिए, एक तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जहाँ तक चैलेंज की बात है, तो जब L1 पॉइंट पर जाना है तो वो अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि इतनी दूर है, ये लगभग 4 गुना है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से। दूसरी बात यह है कि सब इंस्ट्रूमेंट्स को फंक्शन करना है, और अगर बेनिफिट का लिहाज देखें तो एक तो साइंटिफिक बेनिफिट है, और उसको हम पैसों में नहीं आंक सकते हैं, लेकिन ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं इनके प्रति जनता की रुचि बढ़ती है, और जनता समझती है कि हाँ, हमारे भारतीय वैज्ञानिक कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा एक यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो उसके तो मूल्य को हम नहीं आंक सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है जब भी कोई ऐसी लॉन्च होती है, या ऐसा कोई प्रोग्राम इसरो की तरफ से या भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से ये सामने आता है।
रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब इसरो तेजोमय सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा। आइए चलें सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में जिसका नाम है PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन। Namaste viewers. The Indian Space Research Organization is gearing for its rendezvous with the sun. To take you along on the live telecast of this momentous event today, I am Madhuri, giving the commentary in English. With me is my co-commentator, Shivikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. We are about to script yet another chapter in the glorious space research history of India. Today, the workhorse rocket PSLV C-57 will carry Aditya L1, the solar observatory of India, to be placed at a vantage point from where it will be able to continuously observe the sun and while being in the visibility of Earth-based ground stations. 10 days ago, India became the first country in the world to safely land a spacecraft in the South Polar regions on the moon. I'm sure many of you were the eager and proud spectators of the Chandrayaan-3 landing that was being telecast from ISTRAC, situated in Bengaluru. Roger. We bring to you an integration film for the PSLV C-57 that took place in Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रथम कोर चरण S-139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S-139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV C-57 एक्सेल मिशन। तो इसमें हैं 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SI-TVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्कन के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। And here is the second stage of the PSLV rocket, prepared in the subsystem preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. Here you can see the third stage PS3 and PSO being moduled and placed inside the respective shroud and then handled together to be moved to the vehicle assembly building. यह नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container
where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building, again, there is a clean room provision to safely integrate it to the rocket, and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. This is PSLV C-57 standing majestically. अभी अभी आपने देखा PSLV C-57 का इंटीग्रेशन वीडियो। यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं, अंतिम जांच जारी हैं प्रमोशन से पहले की। We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The launch will take place today, the 2nd of September 2023 at 11:50 hours in time from the second launch pad. All stations switch over to channel 2 at T-. The PSLV C-57 in its XL version will carry Aditya L1 spacecraft having a mass of 1,480 kilograms. The mission intends to place the spacecraft in 235 by 19,500 kilometers orbit with an inclination of 19.2 degrees. The total mission duration will be 3,799 seconds or 63 minutes 19 seconds. Apart from Doordarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इस मिशन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं। इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इस तरह आदित्य L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य L1 कर्टेन रेजर। The sun and how it impacts the heliosphere. The sun, which is the center of our solar system and has always fascinated humans, is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process. The visible outer surface of the sun is known as the photosphere, followed by the chromosphere and then the corona. After initially dropping through the chromosphere, the sun's temperature abruptly rises in the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SOOT payload, scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance.
The Aditya Solar Wind Particle Experiment Aspects and Plasma Analyzer Package for Aditya Papa payloads investigate the solar wind and energetic ions, as well as their energy distributions. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, Solexis, and the High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, Helios, analyze X-ray flares from the Sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L1 is equipped to take in situ measurements of charged particles and fields at L1 and is dedicated to studying the Sun across several energy bands. The Lagrange point L1 is located around 1.5 million kilometers from the Earth between the Sun and the Earth. 18 minutes and counting. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the Sun. All payloads are designed in close coordination with ISRO centers and national laboratories like as IIA, IUCAA and PRL. With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. The countdown for PSLV C-57 Aditya L1 mission has been 24 hours long. It had started yesterday. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The propellant have been serviced into the launch vehicle stages. The bottles storing the gases for command and control operations have been charged to pre-launch pressure levels. Roger. Control The to onboard LCC2 batteries and have been charged. Timing confirmed external hold mode. Now in a little while we'll go to the automatic launch sequence initiation, for which the preparations are underway in the launch and mission control centers. ROD to Mission Director. Range is ready for PSLV C-57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All TTC Director confirms readiness of all his track stations and network for supporting अभी आपने सुना C-57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. उपग्रह निदेशक, TCTC, रेंज निदेशक, data lovers of टेलीमेट्री, planet, short one, टेलीकमांड short two निदेशक station. तथा यान निदेशक TCTC ने cockpit. अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है। इसके पश्चात T-16 minutes and सभी counting. आंकड़े संतोषजनक होने पर Director, Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission at 11:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. SDS servers activated. MC अभी confirmed आपने data देखा from SHAR-1 इस and मिशन SHAR-2. के मिशन डायरेक्टर श्री T-minus SR 15 बीजू ने minutes and counting. इस मिशन का Hereby authorize us to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-57 Aditya L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकंड्स पर
RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है। PS2 control system, rhododendron chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system actuation in progress. आदित्य L1 जो कि एक अंतरिक्षयान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए PSLV के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी असेंडिंग मोड और पेरिजी के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है। आदित्य L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्षयान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा। 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी पर कंट्रोल सिस्टम एक्चुएशन इन प्रोग्रेस। Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV C-57 Aditya L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of core S139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lit strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on motors is 70 seconds and the ground-lit and air-lit strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively. The core S139 motor continues to thrust till 110 seconds. Since the second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured if the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second stage, PS2, commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed-loop guidance is initiated, which compares the present state of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated
As the launch vehicle attains 113 kilometers altitude T-minus and the 9 dense minutes and atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 is separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns 418 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues. Counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T-minus 3 minutes and counting. यह PSLV C57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरू फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-minus 2 minutes and counting. अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-minus 1 minute and counting. Minus 55 seconds. All stops are armed. Minus 50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर Minus 40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। VSP open. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent liftoff of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds.
PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV-C 57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage, S-139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. +5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा।
वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 Third किलोमीटर stage performance तथा normal. सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development